आज की स्टडी में हम पढ़ेंगे कि कंटेंट आउटलाइन को कैसे तैयार किया जा सकता है। प्रिपरेशन ऑफ कंटेंट आउटलाइन। फर्स्ट यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज कंटेंट। सबसे पहले आपको कंटेंट के बारे में आगाही होनी चाहिए, समझना चाहिए। इन दिस रिगार्ड कंटेंट रेफर्स to the major matter that will be included in a measuring device. For example, the test of general science, he diagrams pictures of different plants, insects or animals or living or non-living things that constitute the test. For psychomotor tests such as conducting an experiment in laboratory might require setting up of apparatus for the experiment. For an effective device, the content might consist of the series of statements to which the students might choose correct or best answer. Most tests taken by students are developed by teachers. ज़्यादातर जो टेस्ट होते हैं वो उस्ताद बनाते हैं who are already teaching the subject, जो कि उस सब्जेक्ट को पहले से पढ़ा रहे होते हैं, for which they have to develop the test, जिसके लिए वो टेस्ट बना रहे हैं. Therefore, selection of test content might not be problem for them. इसलिए कंटेंट को सेलेक्ट करना उनके लिए एक मसला नहीं होता. Selection and preparation of content also depends on the type of decisions a teacher has to make about the students. कंटेंट की सिलेक्शन और तैयारी के लिए टीचर्स जो फैसले लेता है उस पर भी डिपेंड करता है कि उसने बच्चों के बारे में क्या फैसले करने हैं. इफ द पर्पज ऑफ ए टेस्ट इज टू इवेलुएट द इंस्ट्रक्शन, अगर टेस्ट का जो मकसद है वो इंस्ट्रक्शन को इवेलुएट करना होता है, then the content of a test must reflect the age appropriateness. If test is made for making decisions, अगर टेस्ट जो है वो फैसले बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, regarding selection के लिए टेस्ट लिया जा रहा है, then the content might of predictive nature, तो फिर जो टेस्ट जो है वो predictive nature का होना चाहिए. This type of test domain will provide information that how well the student will perform in the program. A teacher should know that items selected for the test come from instructional material. एक टीचर को मालूम होना चाहिए कि जो आइटम्स उसने सेलेक्ट की हैं वो इंस्ट्रक्शन मटेरियल से ही आनी चाहिए. Which a teacher has covered during teacher, जो कि टीचर ने अपने लेक्चर के दरमियान उनका अहाता किया, उनको पढ़ाया है. You may heard about student reaction during examination, जिनके बारे में आपने एग्जामिनेशन के दौरान, इम्तिहान के दौरान सुना हो. टेस्ट was out of course, के जो टेस्ट जो था वो कोर्स से बाहर था. It indicate that teacher while developing the test items have not considered the content that was taught to students. इसका क्या मतलब है कि जब हम कहते हैं कि टेस्ट जो है वो आउट ऑफ कोर्स है, कोर्स से बाहर है, तो इसका ये मतलब है कि जो आइटम्स टीचर्स ने कंसीडर की हैं वो कंटेंट में से नहीं है. The items included in the test might have been not covered during the instruction period. It implies that the content from which the test item have to be taken should be well defined and structured. Without setting the boundary of knowledge, behaviors or skills to be measured, the test development task will become difficult and complex. As a result, the assessment will produce unreliable results. Therefore, a good test represents the taught content of maximum extent. A test which is representative of the entire content domain is a good test. Therefore, it is imperative for a teacher to prepare outline of the content that will be covered during the instruction. The next step is the selection of subject matter and designing of instructional activities. All these steps are guided by the objective.
One teacher consider objectives of the unit before selection of content, domain, and subsequently designing of test. It is clear from above discussion that the outline of the test content should based on the following principles. Principles of outlines of test content. टेस्ट कंटेंट आउटलाइंस के बारे में क्या असूल हैं? पर्पज ऑफ टेस्ट, टेस्ट का क्या मकसद है? डायग्नोस्टिक टेस्ट, क्लासिफिकेशन, प्लेसमेंट और जॉब एम्प्लॉयमेंट। टेस्ट जो है वो किसके बारे में है? रिप्रेजेंटेटिव sample of knowledge, behavior or skill domain being measured. Relevancy of the topic with the content of the subject. Language of the content should be according to age and grade level of the students. Developing table of specification. A test which meets the criteria stated in above principle will provide reliable and valid information for correct decisions regarding the individual. Now, keeping in view these